Let us start today with the design of columns. Okay, so in the last lecture we have seen, we have seen how to design the column using limit state method. Okay, so the basic difference we understood. What are the equations used? So we have seen how to design a purely axially loaded column with the minimum eccentricity. So today we will see. Okay, so let us first see the different types of columns. Okay. Okay, so first one is purely axially loaded column. Okay, so you have purely axially loaded column. So in that case, the load will be right at the center. So this will be the position of the load, correct? Okay, so if I draw the longitudinal section also, okay, so the load will be acting like this. Okay, so ये है, what is this? This is axially loaded column. Okay, so then there might be a condition, okay, where the load is not exactly at the center. So there might be some eccentricity. Okay, suppose the load is acting somewhere here. Okay, so this will be acting like this. Okay, so let us say this is acting at a distance of a. So this is your uniaxial bending. Okay, so now what will be biaxial bending? So this has eccentricity with respect to both the axes. ठीक है, तो ये केस में क्या हो जाएगा? So the load is acting somewhere here. Okay, so suppose the load is acting somewhere here. So this, in this case, you will be having, take a eccentricity in both the directions. Okay, so this is nothing but your biaxial bending. So this is your biaxial bending. Okay, I hope this is clear to everyone. Axially loaded column, uniaxial bending, and biaxial bending. So this we have already seen. So today we are going to see uniaxial and biaxial. So now let us understand. So you know the different types of columns we have seen here. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक प्योरली एक्सियली लोडेड कॉलम हो सकता है, एंड देन वी हैव एक्सियल लोड एंड यूनिएक्सियल मोमेंट, एंड देन द नेक्स्ट टाइप इज एक्सियल लोड एंड biaxial moment. Okay,
ठीक है, सपोज ठीक है, व्हेन आई से टाइप्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कॉलम्स में, ठीक है, सो देयर आर एक्चुअली 4 टाइप्स, ठीक है। एक तो है एक्चुअली लोडेड कॉलम, then second one is actually loaded column with uniaxial bending moment in x direction, and then actually loaded column with uniaxial bending moment in y direction, and then last we have actually loaded column with biaxial bending moment. Okay, so let us understand this with the help of a plan. Okay, so let me make this clear to you. Okay, suppose I have a plan. Okay, so where I have column positions. Okay, suppose I have column positions. Okay, suppose these are my corner columns. Okay, तो यहाँ पे again I have some column. Okay, so now again here I have some column. Okay, and then again here I have column. Okay, so this actually I'm talking about a plan. Okay, top view. I'm talking about the top view. Okay, and suppose this is my x direction and suppose this is my y direction. ठीक है, so इसमें ठीक है हर एक column, can we design all the columns with one approach only? No, ठीक है, because we know that there are different types of columns. ठीक है, तो first type मैंने क्या बताया था? ठीक है, column type 1. ठीक है, first type I told actually loaded column. ठीक है, so it is only actually loaded column. Can anyone tell me इसमें actually loaded column कौन सा हो सकता है? Yes, anyone? Show the middle 4. Exactly. ठीक है, so this portion, ठीक है, so this column will be your type 1. ठीक है, 1 ये और ये. ठीक है, why? क्योंकि यहाँ पे इसको, ठीक है, ये बीम के वजह से इधर कुछ बेंडिंग मोमेंट आएगा. ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ मोमेंट आया. ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी बीम है तो उसको काउंटर बैलेंस कर देगा. इधर से अगर कुछ मोमेंट आया तो इधर से वो बैलेंस हो जाएगा. सो दिस वी कैन कंसीडर दिस एज अ प्योरली एक्चुअली लोडेड कॉलम. ठीक है, सिमिलरली ये 1 1 1 ये चारों टाइप 1 हो गया. नाउ कैन एनीवन टेल मी टाइप 2, कॉलम टाइप 2 एक्चुअली लोडेड एंड विथ यूनी एक्चुअली मोमेंट. ठीक है, टाइप 2 लेट अस कंसीडर एक्चुअली लोडेड तो रहेगा ही बाय डिफॉल्ट. ठीक है, एंड यूनिएक्शियल मोमेंट let us say in x direction. Okay, ठीक है, so in this case this will be your type 2. ठीक है, यहाँ पे देखो अभी यहाँ से यहाँ पे बीम है. ठीक है, so यहाँ से जो मोमेंट आएगा वो इधर से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो मोमेंट आएगा उसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए नहीं. ओके, सो दिस इज योर टाइप 2 कॉलम, दिस एंड दिस. ठीक है, एंड टाइप 3 कौन सा हो जाएगा? दीज कॉलम्स. दिस इज टाइप 3 कॉलम्स. ठीक है, यहाँ से जो मोमेंट आएगा यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इम्बैलेंस है. एंड लास्ट में योर कॉर्नर मोमेंट्स, कॉर्नर कॉलम्स विल बी डिजाइंड
एज अ बाय एक्शियल बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, हियर यू कैन सी यहाँ से जो मोमेंट आ रहा है यहाँ पे भी कुछ नहीं है बैलेंस करने को, और यहाँ से जो मोमेंट आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, दिस इज नॉट अ बीम। ठीक है, ये मैंने एक्सेस ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं है। सो इन दिस केस बोथ द डायरेक्शंस देयर विल बी moments developed. So this is your biaxial bending moment columns. Okay, so I hope this basics is clear to everyone. So shall we proceed now? Yes or no? Yes, sir. Okay, so now let us start with the numericals. Okay, let us start with the numericals now. So first we will start with columns with uniaxial bending. Okay, so before starting with the numericals, so actually there are two types, there are two methods or approach to solve or design the columns. Okay, first one is the analytical method and the second one is the graphical method or with the help of the charts. So we are going to follow the method of the charts. Okay, so the IS code recommends us to use the method of the design aids. So this design aid is given to us in SP16. Okay, I think SP16 I have shared with you everyone. So in this SP16 we will have the design charts. So with the help of the design charts we will design the columns. Okay, so with designing with the help of these charts becomes very convenient and easy. Okay, so these charts are prepared with rigorous experiments over the period of time with lot of R&D, and these charts are prepared. So we are using these charts to design the columns. So what I'll do, I'll just show you SP16. Okay, so that you understand how are the charts. ठीक है, एनीवन रिमेंबर्स SP34 का यूज क्या था? ठीक है, SP34 एनीवन? यस, reinforcement detailing, करेक्ट. ठीक है, so that is the handbook for reinforcement detailing, correct. ठीक है, so I'll just share my screen. Let us understand these charts. I hope everyone has the soft copy of this. SP16 का soft copy है? Okay, fine, no problem. ठीक है, so because we are going to use this to design the columns. ठीक है, so here you can see, so here okay, so let us see in the contents. Okay, so even in this all the details have been given. Okay, compression members, assumptions, flexural members, so you can go through this now. So here you can see compression with bending. ठीक है, compression with bending, rectangular section, reinforcement distributed equally on two sides. तो यहाँ से we are concerned with these charts. ठीक है, chart 27 to 38. ठीक है, chart number 27 to 38 it deals with rectangular section और reinforcement दो साइड पे जब भी रहेगा distributed, then we will consider these charts. ठीक है, so these charts are further divided into the ratio d dash by d. ठीक है, so first we will find out the ratio d dash by d and accordingly we will use these charts. Is this clear? और इसके लिए corresponding fy के लिए भी we will see and use the charts. ठीक है, so once we solve the numerical you will understand. ठीक है, second देखो,
कंप्रेशन विद बेंडिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन reinforcement distributed equally on four sides. ठीक है, जब reinforcement all the four sides distributed रहेगा, so then we will use these charts. So again we will see the d dash by d ratio. और सर्कुलर सेक्शन के लिए डिफरेंट चार्ट्स है. ठीक है, कंप्रेशन विथ बेंडिंग सर्कुलर सेक्शन के लिए ये है. ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दीज चार्ट्स. एंड इन द एग्जाम जो भी चार्ट रहेगा करस्पॉन्डिंग चार्ट दैट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन पेपर, so no need to worry about that. So while solving you should please keep a soft copy of this when we are solving the numerical. So I hope this is clear. Okay, so let me show you this one chart. So let us go to page 112. Okay, so if you see this chart on page number 112, okay, so this is the chart. In the x-axis you can see it is mu by fck bd square, and in the y-axis it is pu upon fck bd. Okay, pu you know what is the load carrying capacity of the column, fck is the characteristic strength of concrete, b is the width, and d is the depth of the member. Okay, here you can see, and mu is the moment fck bd square. Okay, so this graph is also called as the interaction curve. Okay, so this is basically the interaction curve between these two terms. Okay, so here you can see d dash by d का ratio 0.05 अगर आएगा, so you can consider this chart. ठीक है, अगर d dash by d का 0.1 आता है, so you can see the different chart. And if your grade of steel is 250, so I'm just giving you the overview of how this chart is. And these curves, ठीक है, ये जो curves है, ये curves है pt upon fck. So basically three terms you have to find out. एक तो y axis का pu by fck bd, x axis में mu by fck bd, and pt by fck. ठीक है, suppose if you want to find out the moment, ठीक है, तो ये दो quantities निकालना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ से moment तुमको मिल जाएगा. Suppose you have moment and pu both you have with you, then you have to find out pt. ठीक है, so once we solve the numerical you will understand. I hope this is clear. And now let us start with the numerical. Okay, so do you want to write the steps, or shall we start with the design? Okay, simultaneously you'll understand what to do. Or do you want to first write the steps? Yes. So we will solve simultaneously. Yes, I mean I will also solve with you. I'm asking, do you want to write the design steps? Okay, so write down, it will be better. Okay, so first write down the design steps for uniaxial bending. Okay, so first step is calculate d dash by d. First step, calculate d dash by d based on d dash by d and fy. Select the chart. Simple, that is the first step. Clear? Now second step, calculate pu by fck bd and mu by fck bd square. Second step, calculate pu by fck bd and mu by fck bd square. ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ जो x एक्सिस में है और y एक्सिस में. Okay.
write down the third step. Corresponding to these values, get the value of PT by FCK from the chart. ठीक है, सेकेंड स्टेप तुमने PU by FCK BD फाइंड आउट किया और MU by FCK BD स्क्वायर भी फाइंड आउट किया. So after that, corresponding to these values, get the value of PT by FCK from the chart. Okay, so 3 steps are done. Then fourth step, calculate ASC. ठीक है, एक बार PT मिल गया तो definitely you can find out area of steel in compression. So calculate ASC and provide the number of bars. Fourth step is calculate ASC and provide the number of bars. Then fifth step is design lateral ties. Fifth step is design the lateral ties. Yes. So इतने ही steps है इसमें. The steps are clear to everyone. Everyone have noted down. So now let us take down the first question. सर ये स्टेप बाई एक्शियल के लिए कि यूनी एक्शियल के लिए? यूनी एक्शियल के लिए. ओके. Yes, take down the question. A short reinforced concrete column. A short reinforced concrete column, 300 by 400 mm. A short reinforced concrete column, 300 by 400 mm, is reinforced with 6 bars of 20 mm diameter. Is reinforced with 6 bars of 20 mm diameter. Equally distributed on 2 sides. Equally distributed on 2 sides. Determine the ultimate compressive load which the column can take. Determine the ultimate compressive load the column can take if mu is equal to 100 kilonewton meter. If mu is equal to 100 kilonewton meter and d dash equal to 40 mm and d dash equal to 40 mm. Use M20 and Fe415 steel. Use M20 and Fe415 steel. So that is the question. I hope the question is clear to everyone. Yes, sir. Okay, so now I'll just stop my screen sharing.
ठीक है, so please keep a soft copy ready with you, the chart. Yes, now my screen is visible. Yes, Shorab sir. ji. Okay, so this is the type 3. ठीक है, एक एक्सिस में इसको बैलेंस नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो एक एक्सिस में मोमेंट जनरेट होगा. सो ये है थर्ड टाइप, ये है सेकंड टाइप, और फोर्थ टाइप है ये है कॉर्नर का कॉलम. ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड से, इधर से जो मोमेंट आ रहा है उसके लिए भी बैलेंस करने कुछ नहीं है, और इधर से जो मोमेंट आ रहा है उसको भी बैलेंस करने कुछ नहीं है. ठीक है, सो दैट इज योर बाई एक्शियल कॉलम. ठीक है, तो सेकंड टाइप में कौन से एक्सिस में तुम्हारा बैलेंस नहीं हो रहा है? वाई. ठीक है, तो ये एम यू वाई, और थर्ड में ठीक है एम यू एक्स, थर्ड टाइप. Okay, SP16 you do not have with you. Okay, just give me a moment. Okay, actually it's a big PDF, so okay, I have shared the PDF in A1 group. Do you want me to share in each and every group? Okay, I have shared the PDF in the group. Yes, please mute yourself, others.
So you're mute. So let's start with the solution now. So first, let me write what is given. Okay, so the dimensions are 300 by 400 mm of the column, and I think steel is given. ASC is 6 bars of 20 dia. So give me the value of this. And mu is 100 kilonewton meter, and d dash is equal to 40 mm, and we have to use M20 and Fe415. Okay. So now what we have to do, what we have to find out, anyone can tell me? Sorry. Find out क्या करना है इसमें? PU, correct. Okay, so let us start with the solution. So the first step is to find out D dash by D ratio. ठीक है, ये ASC anyone? 1884.955. ठीक है, so one more thing, it is given in the question कि ये equally distributed on two sides है. ठीक है, तो ये two sides distributed है. ठीक है, so this will help in actually selecting the chart. Now, first step, let us calculate the ratio D dash by D. So therefore, D dash by D कितना हो जाएगा? ठीक है, so now here the column is 300 by 400. ठीक है, so this is B and this is D. So D dash is already given 40 or D है 400. How much is this value? 0.1. ठीक है, so D dash by D का वैल्यू मिल गया. ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप वाज टू फाइंड आउट द रेशियो. ठीक है, so now with the help of this we will select the chart. ठीक है, अभी कौन सा चार्ट सिलेक्ट करेंगे? D dash by D 0.1 है, reinforcement is equally distributed on two sides, and Fe415 है. ठीक है, तो इसके लिए we have to first select the chart. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यही दिया है मैंने. देन उसके बाद सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट PU. ठीक है, सो MU by FC के BD स्क्वायर वी कैन फाइंड आउट. ठीक है, तो सेकंड स्टेप में वी विल फाइंड आउट MU by FC के BD स्क्वायर. So here let us first find out MU by FC के BD स्क्वायर. तो ये कितना आ रहा है? MU is 100 given, and FCK is 20, and B is 300, and D is 0.104. ठीक है, others also getting the same value.
Yes, sir. Yes. So we got the value of mu by fck bd square. Now what we will find out? ठीक है, now we will find out pt by fck. ठीक है, pt by fck फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. कितने टर्म है अपने पास? x एक्सिस पे है mu by fck bd स्क्वायर, y एक्सिस पे है pu अपॉन fck bd. ठीक है, pu तो अननोन है, pu फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो थर्ड पैरामीटर क्या है? pt by fck वी कैन फाइंड आउट pt by fck. ठीक है, where pt is what? Where pt is asc upon bd into 100. ठीक है, फाइंड आउट करो pt और बताओ मुझे वैल्यू. ठीक है, asc is 1884.95. दिस इज 300 by 400. 1.57. 1.57. ठीक है, 3 डिजिट्स में भी बता सकते हो. 1.5. ठीक है, लेट अस 70. 70. ठीक है, सो लेट अस. ठीक है, ये ठीक है चार्ट्स है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ द डिजिट्स और थोड़ा एक्यूरेटली करना, तो तुमको आंसर्स भी एक्यूरेटली मिलेंगे. ठीक है, so take care of the digits. So 3 digits will be better in this case. So we got pt by fck. So we got pt actually. So now what is pt by fck? pt is 1.57 and fck is 20. Zero point zero seven eight. 0.078. Okay. So now from, ठीक है, कौन सा चार्ट यूज करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? ठीक है, सो नाउ फ्रॉम 415 और d dash by d. ठीक है, चार्ट नंबर कैन यू टेल मी? 32. Perfect. ठीक है, अविनाश is saying 32. So now from chart 32 डिजाइन हैंडबुक. ठीक है, ये क्या है? अपनी डिजाइन हैंडबुक SP16 है. So from chart for mu by fck bd square is equal to 0.104 and pt by fck equal to 0.078. we get the value of pu by fck bd as what? Can anyone tell me now? ठीक है, so okay, what I'll do, I'll just show you on the screen. So I'll just share my screen. ठीक है, चार्ट नंबर 32. ठीक है, 27 है, 28, 29, 30, 31 एंड 32. ठीक है, 32 देखो, 2 साइड्स पे डिस्ट्रीब्यूशन है एंड Fe415 है और d डैश बाय d का रेशियो 0.1 है. ठीक है, सो आई विल जस्ट जूम. सो वी हैव 2 थिंग्स. x एक्सिस का है अपने पास mu by fck bd स्क्वायर. कितना है वैल्यू? दिस इज 0.1. ठीक है, यहाँ पे देखो 0.104 है. इफ यू सी दीज आर डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 में डिवाइड है.
तो ये अगर 0.1 है तो इसका जो नेक्स्ट लाइन है वो कितना हो जाएगा? एनीवन? 111 एग्जैक्टली ठीक है, ये 0.1 है तो ये 0.11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0.20। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? नाउ ठीक है, वाई डायरेक्शन में क्या है देखो, 5 में डिवाइडेड है, 0.1 है तो यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0.12 14 16 18 फिर 20। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? नाउ दिस इज द कर्व फॉर पी टी बाई एफ सी के। ठीक है, सो अपना पी टी बाई एफ सी के कितना है? 0.078। तो यहाँ पे देखो कर्व के ऊपर उसका वैल्यू है, तो ये कर्व 0 है, फिर ये 0.02 है। ओके, आई थिंक मोबाइल में तुमको ज्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, 0.02, फिर 1 2 3, फोर्थ कर्व ये 0.08 है, राइट? तो दैट इज, अगर हम 0.08 इसको मैंने देखा और एक्स एम यू बाय है 0.104। ठीक है, तो सपोज सेकेंड वैल्यू पे मैंने अगर कंसिडर किया अप्रोक्स, एंड ठीक है, यहाँ पे तुमको लाइंस भी दिए हैं तो यू कैन एक्चुअली एक्यूरेटली फाइंड आउट। हाँ, तो इसमें ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन मत करना, जितना एक्यूरेटली हो सके उतना फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 0.8 पे इंटरसेक्ट किया तो कितना आ रहा है? मेरा कर्सर दिख रहा है, बताओ मुझे। स्केल ले लो एक बार और फिर अच्छे से चेक करो। PU by FCK BD, Avinash is saying 0.445. Yes, anyone got this value? 0.46 OS। ठीक है, 0.1 से भी अगर मैंने स्टार्ट किया सपोज 1, ठीक है, और 0.8 पे ये किधर इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां पे कितना वैल्यू आ रहा है? 46। ठीक है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है ना, 104 है, तो थोड़ा सा अगर मैंने आगे ले लिया और 0.8 से भी थोड़ा कम है, ठीक है, तो और थोड़ा नीचे आ जाओ। आर यू गेटिंग? 0.8 नहीं है अपना पीटी, अपना है 0.078 है। ठीक है, तो थोड़ा 0.8 से नीचे आ जाओ, फिर उसके बाद बताओ। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, यस, ठीक है, 0.42 आई थिंक अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो वन वन मोर वे ऑफ डूइंग दिस इज व्हाट यू कैन डू, 0.06 जो पीटी है, ठीक है, 0.06 पीटी के लिए कितना वैल्यू आ रहा है? ठीक है, वो तो डिफाइंड है एग्जैक्टली 0.08 और 0.06 के बीच में है ना अपना पीटी, तो उसको इंटरपोलेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक फिक्स कर दो एक्स एक्सिस का, और 0.08 के लिए उधर कितना आ रहा है और 0.6 के लिए कितना आ रहा है उसको इंटरपोलेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ इन दिस केस आई एम जस्ट गिविंग यू वन मोर option to accurately find out the value. ठीक है, so here let us consider 0.42. Okay, so now, okay, I'll just stop the screen share. So now let us consider, we get PU by FCK BD is equal to 0.42 from the chart. So therefore PU कितना हो जाएगा? PU is equal to 0.42 into FCK into B into D. ठीक है, so this is 0.42, FCK is 20, B is 300, and depth is 400. So now give me the value of this quickly.
यस कितना आ रहा है वैल्यू इसका 1008 ओके 1008 किलो न्यूटन परफेक्ट ठीक है सो अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट ठीक है तो ये केस में वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट पीयू सिमिलरली अगर सपोज मैंने एमयू फाइंड आउट करने बोला सो कैन यू फाइंड आउट एमयू ठीक है सेम हो जाएगा ना so you can find out mu also so this is one of the type ठीक है either pu or mu you have to find out ठीक है so now tell me ठीक है in the same problem ठीक है in the same problem what I am doing is I am giving you pu I am giving you the value of pu as 800 kilonewton ठीक है so now give me the value of mu yes quickly ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए so I am giving you the value of pu in the same question और mu find out करना है yes do it quickly yes anyone got the value write in the chat box
Yes, I hope everyone has done that. Only one student gave me the value. Yes, what about others? Yes, am I audible, everyone? Okay, fine. So I hope everyone has got the values and understood if the other value is given, how to find out. So it's the same way. So nothing different. So now let us move on to the next question. Okay, so this is the design problem. So that was just a basic one. So now let us move on to the next question. Take down the question. Design reinforcement for column of size. Design the reinforcement for a column of size 300 by 400 mm. 300 by 400 mm having an effective length of 3.5 meters. Having an effective length of 3.5 meters. An axial load of 1000 kilonewton. An axial load of 1000 kilonewton and a moment of 150 kilonewton meter about the major axis of the columns are acting on column. An axial load of 1000 kilonewton and a moment of 150 kilonewton meter about the major axis of the column are acting on the column. Using M25 and Fe415 provide the reinforcement. Using M25 and Fe415 provide the reinforcement. ठीक है, first case on two sides, second case on all the four sides. First case on two sides, reinforcement is on two sides. Second case, reinforcement is on all the four sides. Okay, so that is the question for you. Yes, I hope everyone has noted down the question. So now let us start with it. Okay, so what is given to us? Given to us is, okay, सबसे पहले size is given 300 by 400. Now L effective is given 3.5 meter and axial load is also given. PU is 100 and moment is also given. Okay, MU is 150 kilonewton meter and we have to use M25 and Fe415. ठीक है? ये 100 दे कि 1000 दे? What? PU is 100. Sorry. PU is 1000 kilonewton. Right. Okay, so no doubt PU is 1000. ठीक है, so now tell me MU तुमको दिया है 150 and what is mentioned? MU के लिए 150 kilonewton meter about the major axis of the column. ठीक है, तो ये मोमेंट कौन से एक्सिस पे दिया है? कैन एनीवन टेल मी? ठीक है, सो हियर इट इज मेंशन्ड अबाउट मेजर एक्सिस. Yes, please do not write the attendance in between. Roll number 57. ठीक है, I will not consider if you write in between. Yes, ठीक है, so moment is 150 about the major axis. So what do you mean by this? कौन से एक्सिस में है ये मोमेंट? ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस.
ठीक है, what we have to find out, we have to find the reinforcement basically, और उसके लिए भी दो केसेस दिया है क्वेश्चन में, when the reinforcement is on two sides and when the reinforcement is on all the four sides. ठीक है, so now mu किसने बताया नहीं मुझे, कौन सा एक्सिस का मोमेंट है ये, एनीवन? ठीक है, so about the major axis, मतलब this is mu x is given to us. ठीक है, is this clear to everyone? ठीक है, so now yes, is this clear, yes or no? सर मतलब मेजर एक्सिस पे दिया है तो मतलब हमेशा एम यू एक्स है। हाँ ठीक है, मेजर एक्सिस तुमको पहले समझना पड़ेगा कि मेजर एक्सिस इसका है क्या। ठीक है, हमेशा एम यू एक्स है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द मेजर एक्सिस। ठीक है, सपोज यही मैंने एग्जांपल लिया, 300 बाय 400 तुम्हारा कॉलम साइज दिया है, तो मेजर एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, आई जस्ट शो यू हियर। ठीक है, मेजर एक्सिस ये सपोज मेरा 300 बाय 400 है। ठीक है, तो अभी इसको इसमें मेजर एक्सिस फाइंड आउट करना है। लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस एंड लेट अस से दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अभी मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। आई एक्स एक्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? आई एक्स एक्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, बी डी क्यूब बाई 12, करेक्ट। तो इसमें बी क्या है? 300 और डेप्थ कितना है? 400। ठीक है, बी डी क्यूब बाई 12। और अगर मैंने आई वाई वाई लिया, ठीक है, आई वाई वाई में क्या हो जाएगा? डीबी क्यूब। हाँ, डीबी क्यूब। तो 400 इंटू 300 क्यूब बाई 12। अभी कौन सा वैल्यू ज्यादा है इसमें से? वाई एक्स वाई ज्यादा रहेगा, एक्स एक्स ज्यादा रहेगा ना। तुम्हारा एक्स एक्स वैल्यू ज्यादा है, so that means your x-axis is the major axis. Are you getting? So this is how you are going to find out कि कौन सा major axis है और कौन सा minor axis। तो यहाँ पे x-axis अपना major axis हो गया और y अपना minor axis हो गया। ठीक है, is this clear everyone? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। So now 300 by 400 अपने को दिया है। ठीक है, तो इसमें major axis we know x-axis है, so mu(x) अपने को दिया है। Now what is the first step? Design। ठीक है, फर्स्ट अभी इधर एक्चुअली लेंथ भी दिया है, करेक्ट। ठीक है, सो लेंथ दिया है तो सबसे पहले वही चेक कर लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, लेट अस चेक फॉर स्लेंडरनेस। ओके, सो फर्स्ट लेट अस चेक फॉर स्लेंडरनेस। ठीक है, तो स्लेंडरनेस एल इफेक्टिव बाय डी कितना आ रहा है? दोनों भी निकालो। डी इज 400 and L effective B is 300। फर्स्ट वैल्यू कितना है, सेकंड वैल्यू कितना है? $8.75 first value. So which is less than 12 and this And 11.667. 11.67. So again this is less than 12. So hence we can say that hence it is a short column.
ठीक है, सो नाउ लेट अस फाइंड आउट सेकेंड स्टेप क्या रहेगा अभी. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी. ठीक है, एक्शन यूनि एक्शन मोमेंट है तो ऑब्वियसली इसेंट्रिसिटी रहेगा. सो लेट अस कैलकुलेट इसेंट्रिसिटी. So eccentricity is nothing but pu into e. ठीक है, mu is given 150, pu is also given. So e कितना हो गया anyone? $150. 150. Okay, so we got the value of eccentricity. ठीक है, so now we have to check also for this eccentricity. ठीक है, चेक करना पड़ेगा. तो e minimum x, e minimum दोनों डायरेक्शन में निकालेंगे. e minimum x is unsupported length upon 500 plus lateral dimension upon 30. ठीक है, so इसमें एक ही लेंथ दिया है, so we will consider that length 3500 upon 500 plus lateral dimension कितना है. ठीक है, x डायरेक्शन में lateral dimension कितना हो जाएगा. x का बाइसेक्टिंग क्या हो रहा है 400. ठीक है, लास्ट टाइम we had discussed 400 by 30. So how much is this? And similarly e minimum y डायरेक्शन में भी निकालो. तो y डायरेक्शन के लिए हो जाएगा 300. $20.33 and 17. ठीक है, so here you can see that this e minimum is less than e minimum is less than e, this is also less than e. So hence we can say that hence it is designed as a short column subjected to axial load and bending. Hence it is to be designed as a short column subjected to axial load and bending. So now what is the next step? ठीक है, basic checks हो गया. So now you can find out the reinforcement. ठीक है, what is the goal, what is the objective of us is to find out the reinforcement. ठीक है, अपने को reinforcement find out करना है. So now come back to the last procedure. ठीक है, last problem में जो किया था. So in this what are the knowns and what are the unknowns? ठीक है, अगर reinforcement find out करना है तो पहले PT find out करना पड़ेगा. Correct? So PT upon FC के unknown है. So find out the other things. ठीक है, next step is to find out the reinforcement. Calculation of reinforcement. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट केस कर रहे हैं when reinforcement is distributed on two faces. ठीक है, तो अभी सबसे पहले let us find out PU by FCK BD. ठीक है, इसका वैल्यू PU is 1000, FCK is 20 है या 25, कितना दिया है क्वेश्चन में? 25. हाँ 25 है ना, 20. Okay, 25. So 25 into B is how much?
300 and depth is 400. Yes, give me the value. ये वाला Arida is 0.33. Okay. ठीक है. अभी similarly give me the value of mu upon FCK BD square. mu is 150 or 0. It is saying 0.125. ठीक है. What is 90.15? 0.12. Okay. Okay, so we got both the ratios. So now we have to find out the ratio d dash by d also. For that, let us assume a suitable effective cover. So assuming, so let us assume, okay, so this depends on you. So let us assume effective cover d dash is equal to 40 mm. ठीक है. So therefore ratio क्या हो जाएगा? d dash by d 40 upon 400 0.1. ठीक है. So we got everything now. ठीक है. So now find out area of steel. Find out ASC now. ठीक है. d dash है. अभी सबसे पहले तो चार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा ना. So referring which chart? Referring, ठीक है. FE415 है, d dash by ये है, 2 sides है. I think so previous chart only we have to refer. ठीक है. Last time कौन सा चार्ट यूज किया था? 32. ठीक है. सेम referring chart 32. Referring chart 32 of SP16 for mu by FCK BD square equal to 0.125 and PU by FCK BD equal to 0.33, we get PT upon FCK as what? Can anyone tell me? ठीक है. अभी PT by FCK का वैल्यू बताओ मुझे. ठीक है. I hope this you can do it on your own. ठीक है. This one first problem we have already done. So on the same basis, okay. Siddiqui Fateh is saying 0.06. PT is 1.5. Such a huge difference. ठीक है. पहले मुझे सिर्फ ये बताओ ये कितना आ रहा है, उसके बाद we'll find out PT. पहले सिर्फ ये मुझे बताओ from the chart कितना मिल रहा है, then we will go ahead. .06. Yes, anyone else? ठीक है. Let us check. ठीक है. I'll just share my screen. ठीक है. So let us check now. I hope my screen is visible. So what we have, the value of mu by FCK BD square अपना वैल्यू है 0.125. ठीक है. तो 11, 12 और 13 के बीच में यहाँ पे रहेगा. ओके.
एंड देन वाई एक्सिस पे कितना है, पी यू बाई एफ सी की वैल्यू 0.33 है। ठीक है, तो ये तो डिवाइडेड है 5 में, ये 0.32 है, 0.34 है, तो इसके बीच में रहेगा ये यहाँ पे। और ठीक है, 0.06 और 0.08 के बीच में आ रहा है ना, आर यू गेटिंग? 0.06 और 0.08 के बीच में है, तो उसके बीच का वैल्यू रहेगा। ठीक है, सो 0.06 और 0.08 के बीच में है एक्चुअली। ठीक है, सो मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसको इंटरपोलेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा, या फिर एक बीच में का वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस एज्यूम 0.075। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सेफर साइड पे एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अदर ऑप्शन मैंने क्या बताया, और एक्यूरेटली करना है तो इंटरपोलेट करो। So now let us find out the PT. So therefore PT is nothing but 0.075 into 25, which is nothing but how much? 1.875. So now let us find out area of steel, ASC. So ASC is given by PT upon 100 into BD. ठीक है, कितना आ रहा है बताओ? Give me the value of ASC. 2250. 2250. We got the value of area. So now let us select a suitable diameter and provide the number of bars. ठीक है, so let us assume, कितना diameter assume करना है? 20. Okay, 20 में कितने number of bars आ रहे हैं? 8. 8. ठीक है, so assuming 20 mm diameter bars, number of bars is equal to, ठीक है, ये exact 8 आ रहा है क्या? 7.16. So let us provide 8 bars. ठीक है, so therefore provide 8 bars of 20 diameter as the longitudinal range. ठीक है, so longitudinal steel हो गया. So now you can actually design the lateral ties. ठीक है, अभी next step lateral ties और transverse reinforcement. ठीक है, design the lateral ties. Diameter select करो. ठीक है, जो लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया था, उसके बाद पिच सिलेक्ट करो, जो लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया था. ठीक है, सो लेट अस से 8 mm
और पिच का 3 क्राइटेरिया क्या था? ठीक है, लार्जेस्ट लॉन्जिट्यूड 16 टाइम्स द लार्जेस्ट लॉन्जिट्यूडनल बार, है ना? और क्या था? $300 and anything else? Least lateral dimension. Least lateral dimension. Yes, so least lateral dimension है again same thing 300 है. So therefore provide 8 torque at 300 mm center to center. So that is your design.